हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल AmgK एंड मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमोघ। गोवा में बारिश स्टार्ट हो चुकी है एंड आपको पता है बारिश होता है तब क्या होता है गोवा में, वाटरफॉल्स। एंड दिस गाय हियर लव्स वाटरफॉल्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वाटरफॉल्स पे लेके जाऊँगा। बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब राइट नाउ because there's a lot of exciting content coming your way this season. मिलते हैं अभी बाइक पे, लेट्स गो। ओके, सो हियर वी आर ऑन आवर वे। आई होप आपने गोवा का बिरला मंदिर देखा रहेगा। अगर नहीं देखा है या फिर देखा भी है तो मैंने इस मंदिर पे वीडियो डाला है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। और मैंने जो शॉर्ट्स डाला था इस मंदिर पे, दैट हैज़ क्रॉस्ड 60,000 व्यूज़ विच इज़ क्रेजी। सो या, थैंक यू फॉर द लव। इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ येट, इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना। अभी हमने जस्ट फ्यूल अप कर लिया है एंड टायर की हवा भी चेक कर ली है ऑन द पेट्रोल बंक बिहाइंड अस एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वाटरफॉल। बारिश अब भी स्टार्ट हो चुकी है, सो इट इज़ अ बिट ट्रिकी, बट रेनकोट है तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड द वाटरफॉल इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज, सो जल्दी पहुंच जाएंगे। 5 minutes later. ये रहा हमारा फर्स्ट लोकेशन। सरप्राइजिंगली इट्स क्वाइट एम्प्टी टुडे, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। You can park your vehicles इधर पीछे and you have to take these steps to go to the waterfall. Let's park the bike and get on the foot. और बहुत दिनों के बाद बाइक चला के इस वेदर में मज़ा आ रही है। ओके, सो अभी हम आए हमारे फर्स्ट लोकेशन पे, दैट इज़ दिस ब्यूटीफुल, यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे। केसरवाल वाटरफॉल्स। ये है हमारा आज का फर्स्ट लोकेशन। क्लोजअप्स आपको दिखाऊंगा एंड ऑब्वियसली प्लेस भी आपको दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। It's a very easy waterfall actually. Just have to park your bike over there, your car, and there are steps which you can take like this to head to the waterfall. और ये आपको फर्स्ट झलक वाटरफॉल की दिखती हुई इन हार्डली 50 to 16 steps. You can see my boy Ride Nation here taking the cinematic shots. Boy, woo! I've been here many times, but इतना फ्लो मैंने पहले कभी नहीं देखा इस वाटरफॉल पे। It's pretty nice, pretty good. First waterfall done. Moving on to the next one. Rakesh, next one कौन सा है? Mist waterfall. Good. Let's go to the Mist waterfall. Moving on to the second location. I am sure most of you all know where I am right now. I mean, this road, this location is pretty famous among auto enthusiasts. Those are not the waterfalls though, which I want to show you, but we are going up in front because there is a big waterfall. The weather is perfect right now. बारिश भी कुछ नहीं है, so अच्छा ठंड हवा चल रही है and it feels really nice to ride in this weather. Also we are going to Aqua Waterfalls first. वो हमें पहले मिलता है on the way, so we are going there. I think I did not mention to you all that we have the R15 with us today, and just have a look at this beauty, man. Such a beautiful machine in the 150cc segment.
Okay, so here we are at the location. It's a very mild off-road trail. Easily आप पहुंच सकते हो यहाँ पे with your scooters or any other vehicle. Wow, this place also seems quite busy today. So yeah, people are moving out of their homes. It's a nice thing. Be careful though while you're visiting waterfalls and all those locations. Okay, so here we are at the second waterfall. Rakesh, sorry boy. पहले हम एक्वा वाटरफॉल पे आए हैं. मिस्ट वाटरफॉल नेक्स्ट जाएंगे. Okay. चलो एक्वा वाटरफॉल. यस. सो ट्रैकिंग टूवर्ड्स इट. इजी है ट्रैक. बाइक वहाँ पे पार्क है ऊपर एंड वी जस्ट वॉकिंग डाउन ओवर हियर. किधर आता? हाँ स्लिप जाता. ओके ओके स्लिप हो रहा है. ओके. Surprisingly, all the waterfalls seem crowded. और ये है हमारा दूसरा यूट्यूबर राइड नेशन. जल्दी से सब्सक्राइब करना. Yes. Do check out my channel. Yes, and second location done. We are moving forward to the third location, Mist Waterfall. It is very close from here. So before we get to the Mist Waterfall, I just have a small request for you. You see that how excited we get while looking at this natural place, while looking at these waterfalls, and we just love to be there. And at the same time we see a lot of people polluting these places with leftover chips packet, soft drink bottles, alcohol bottles and whatnot. So it's a small request from me that if you are visiting these places, please keep them clean. Take back the trash which you have got there and keep them clean, because यहाँ पे भी अगर हम लोग ट्रैश या फिर कूड़ा फेंकने लगे तो these places will lose their excitement that we have for them. So yeah, it's a small request. I mean, if you can take something which is full, a packet or bottle which is full, you can definitely get it back when it's empty. आजा ब्रो, आराम से. Very good. Oh yes. So this is one waterfall which I found during my college days, and man oh man, I love this waterfall. We are not going to go down now. अभी हम ऊपर से waterfall को देखेंगे. You can go down. वहाँ से एक रास्ता है. You can go down and check out the waterfall from there. But yeah, I'll show you all the waterfall from here. Okay, तो अभी हो चुका है मिस्ट वाटरफॉल कंप्लीट एंड मूविंग टू टुडेज लास्ट वाटरफॉल विच इज उडियार स्प्रिंग्स. यहाँ से नज़दीक ही है. So let's get on the bike and let's get moving. Okay, so that was the third waterfall. So moving on to the last waterfall for today, ODR Springs. Surprisingly, there are even people over here at the Mist Waterfall, but
I guess that's how it is now, that everyone wants to be at waterfalls. So yeah, it's a good thing. But again, I'm saying it, be careful at the same time. वैसे आई होप आपको अब तक वीडियो पसंद आया रहेगा, और यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज इट हेल्प्स द एल्गोरिथम एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो नो कि आप कितने देर तक इस वीडियो को देख रहे हो. ये लास्ट वाला लोकेशन यहाँ से बहुत ही नज़दीक है अगेन. सो या, लेट्स गेट देयर सून. सो हियर वी आर. यहाँ पे यूजुअली बहुत गर्दी रहती है, बट देखेंगे आज वीकडे है सो शायद थोड़ी कम रह सकती है. ओके, बाइक्स तो कम है, लेट्स सी. आई गेस गर्दी थोड़ी कम है. Okay, so I was wrong. यहाँ पे बहुत गर्दी है at this waterfall, and people are actually enjoying at this place. So I did not want to go in with my camera to shoot the location as it would disturb them. Trying to avoid the crowd, मैंने बस थोड़े shots लिए हैं. I hope you all understand. But जो main आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि I'll deliver 4 waterfalls to you in this video, and that was the 4th waterfall. Now it's your turn to share this video with your friends with whom you want to visit these waterfalls. Also, if you want more videos like these where we explore waterfalls in and around Goa, let me know in the comment section below. So with that, I would conclude this video. Thank you so much for sharing, subscribing and watching this video. Peace out.